हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक क्वाइट इंटरेस्टिंग है गाइस, बिकॉज आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप घर बैठे अच्छा पैसा कैसे कमा सकते हैं एंड दैट डजंट रिक्वायर अ वेरी हाई फाई डिग्री लाइक आईटी, फार्मा या फिर ऐसे फिनेंस। नो, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वेरी इजी वे कि आप बहुत ही इजीएस्ट वे में कैसे पैसा आप कमा सकते हैं। अगर आपने बैचलर्स करी है, मे बी अगर आपने बीए भी किया है, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, या फिर आपने कोई भी सिंपल बैचलर्स किया है, कोई ऐसी हाई फाई प्रोफेशनल डिग्री नहीं करा है, बट स्टिल you can earn a good amount of money, like if you have those skill set that is required, and that is the very basic skills that I'm going to talk about, because that I mean covid के बाद ऐसे बहुत सारे वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, ऐसे रिमोट जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज आ रही है, एंड देन फ्रीलांसिंग, ये चीजें बहुत ही क्वाइट ट्रेंडिंग में है। So anyone those who have such type of skills or basic skills that is required for that particular job can get those jobs. So I thought कि क्यों ना मैं ये वीडियो बनाती हूँ, बिकॉज आई नो कि मतलब मुझे बहुत सारे ऐसे रिक्वेस्ट आए कि मैं ऐसा स्टूडेंट हूँ एंड आई वांट टू earn a good amount of money, then how can I earn? So this video is guys for a student or the for working professional or maybe anyone जो अपने part time में ये work करना चाहते हैं can go with that. So I'm going to talk about this virtual assistance topic, and I've created separate slide deck for that, so I'll share my screen and talk one by one about that. But yeah, before that I just want to mention that key it's very easy to earn money. It's nothing hard. What you need to do, you need to learn certain skills, and then you need to know what are the platforms, platforms available where you can go and apply for that particular job. So I think those type of information is mainly required if you want any job. So if you have not yet subscribed my channel, then please hit on the subscribe button, and also please hit on the all notifications, so whenever I create those videos, so you will automatically get the notification for that, because I'm regularly creating the videos. So every week my target is that I can post at least 4 videos on this education, or how you can get jobs, or the highest paid job, or what are the trending skills, या जो भी ऐसे टॉपिक्स होते हैं मैं रेगुलरली वीडियोस क्रिएट करती हूँ, बिकॉज आई नो कि आजकल के जनरेशन में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अर्न मनी, वेदर यू आर अ स्टूडेंट, वेदर यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, या तो आप हाउस होल्ड हो। तो आई मीन जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से पैसा कमाना भी बहुत ज़रूरी है। सो सिंस आई डू हैव गुड अमाउंट ऑफ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस in the working industry or the corporate sector, and I do have other experiences, so I thought why not to share my experience with you also, you all can get benefit from my experience, या फिर जो भी मैं लर्न कर रही हूँ वो मैं आपके साथ ही साथ शेयर करते चलो, ताकि आप लोग भी उस चीज़ को लर्न कर सको और उस चीज़ से बहुत अच्छे पैसे अर्न कर सको। सो दैट इज़ द मोटो ऑफ my this limitless Shivangi channel. So guys, do support my channel, and I mean if you want to learn any topic, maybe any skills, or maybe you want to know about any working profession, or maybe आपके लिए क्या करियर अच्छा रहेगा, so do add your comments in the comment box, so I'll be more than happy to create videos on those topics, so that you can get benefit for that. And in addition to that, if you think that कि आपको कोई personal suggestion लेना है with regards to your career or job, then my email ID is also present in my description, so you can go and write your concern over the email, or maybe write your query over the email. So I'm also responding on all the emails which I'm receiving, or maybe अगर आप comment में भी add करोगे तो भी I'm reading those comments, and based upon that your feedback and insights I'm creating the videos. So I'm open for that. I mean, I know I'm here to sharing my experience or teaching you, like if I know something. So that is the intent of this video, and I want to continue this momentum for a long time, or for long years, because this is kind of platform where I'm spending my weekends. So Monday to Friday I'm pretty much occupied in my main work, which I'm doing, and then Saturday Sunday I'm dedicating you guys, so that you can also learn these skills. So I'm more than happy to if someone is getting benefits from my experience. So yeah, that is the intent of this video, and let's get started. I'll talk one by one about ki वर्चुअल असिस्टेंस क्या है, एंड क्या स्किल्स आपको रिक्वायर्ड है, एंड कैसे आपको जॉब मिल सकती है, व्हाट आर द प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं. सो आई टॉक इन डेप्थ अबाउट दैट टॉपिक, सो लेट्स गेट स्टार्टेड.
Let's get started. So I'm going to talk about this virtual assistants topic, and one by one I'll cover in depth like कि मैं क्या क्या करने वाली हूँ and क्या क्या टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, and I'll talk all the steps in my slide deck. So let's get started. So this is the table of content which I'm going to cover today. So first topic is introduction, like what is actually virtual assistants and what is the qualification is required, and then what is the benefits of having virtual assistants in any organization, and then what are the tasks which is required for the or the job roles and responsibility for that virtual assistants, and then what are the skills which is I mean mandatory skills for the virtual assistant, एंड देन हाउ यू कैन फाइंड अपॉर्चुनिटीज, मतलब ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जाके जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो. सो या दीज आर द टॉपिक्स व्हिच आई एम गोइंग टू कवर इन माय टुडेज वीडियो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So what is virtual assistance? So it's nothing but it's a self-employed worker who is specialized in offering the administrative service to the client from a remote location. So हिंदी में मैं बताती हूँ. वर्चुअल असिस्टेंट इज नथिंग बट एक ऐसा पर्सन है जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस प्रोवाइड करता है किसी कंपनी को. मे बी कोई पर्सन है वो अपना बिजनेस रन कर रहा है, मे बी बिग बिजनेस और स्मॉल बिजनेस और द मीडियम. बिकॉज यूजुअली क्या होता है, जो बिग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके पास जो ऐसे ऑपरेशनल मैनेजर्स या ऑपरेशंस की जो जॉब होती है उनके पास एक पर्सन होता है, मे बी जो साइट हेड होता है या मे बी सीईओ होता है, या फिर ऐसे जो बड़े बड़े पोजीशंस पे लोग हेड होते हैं उनके पास एक असिस्टेंट प्रेजेंट होता है जो कि उनका सारा टास्क करता है, लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क. एंड व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क? नाउ द क्वेश्चन इज मिस विच मीन्स मीटिंग सेंड करना, मेल्स लिखना, उनके बिहाफ पे उनकी फ्लाइट टिकट्स बुक करना. ऐसे बहुत सारे टास्क होते हैं जो रिक्वायर्ड होता है, बिकॉज जो ऐसे सीनियर पोजीशंस पे होते हैं उन्हें ट्रैवल करना होता है ना, बहुत सारी मीटिंग्स लेनी होती है लोगों से, तो ऐसे बहुत सारे टास्क रिक्वायर्ड होते हैं. दैट टास्क इज डन बाय द वर्चुअल असिस्टेंट. सो बड़ी कंपनीज में क्या होता है, ये पर्सन ऑलरेडी देयर इज अ परमानेंट पोजीशन फॉर द ऑपरेशन मैनेजर्स और द ऑपरेशन पर्सन. बट इन दी मे बी दोज हु आर रनिंग द स्मॉल बिजनेस और मीडियम बिजनेस, तो वो उनके लिए इतना ये अफोर्डेबल नहीं होता कि वो एक ऑपरेशन रख के चले, या फिर बहुत सारे लोग प्रेफर नहीं करते. वाई व्हाट्स द नीड टू पे इन्वेस्ट सो मच मनी ऑन दैट. सो दैट्स वाई वो क्या करते हैं, वो वर्चुअल असिस्टेंट हायर करते हैं. उनके लिए क्या होता है कि आप कहीं से भी ये सर्विस दे सकते हो, मे बी आप वर्क फ्रॉम होम करके या आप कहीं भी हो, मे बी ऑल ओवर द वर्ल्ड, एज लॉन्ग एज आपको पता है आपके पास वो स्किल सेट है जो कि एक वर्चुअल असिस्टेंट के लिए होनी चाहिए, देन यू कैन गेट जॉब फॉर दैट. सो दैट इज अबाउट द virtual assistant. As the name indicate virtual, which means it's not required your presence into the office. You can do this task anywhere, maybe from work, from your home, or maybe home office, or anywhere, as I mentioned, as long as their task should be completed. So that is the main intent. It's not like कि आपको office में होना है. So no, that is the meaning of virtual assistants. Now I'll talk in depth about this virtual assistants. So let me move towards the next slide deck. So yeah, so virtual assistant, so they are specialized in offering the administrative service. So as I mentioned कि वो administrative service देने के लिए specialized होते हैं, maybe scheduling appointments, making the phone calls, making the travel arrangements, and then managing the email account. So as I mentioned कि जब कोई कंपनी में बड़ा पर्सन होता है लाइक द सीईओ और मे बी एज अ साइट हेड एंड ऑल, सो उनकी बहुत सारी मीटिंग्स होती है जो ऑर्गेनाइज करना होता है, और उनके लिए मेल्स, उनके बिहाफ पे मेल्स भेजना, एंड देन उनके फ्लाइट टिकट्स बुक करना, या उनकी जो फ़ोन कॉल्स होते हैं वो हैंडल करना. दीज टाइप ऑफ टास्क इज डन बाय द वर्चुअल असिस्टेंट. एंड इन एडिशन टू दैट कभी कभी क्या होता है कि आजकल आप देख रहे होगे ये ग्राफिक डिजाइनिंग एंड इन द सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये टाइप की स्किल्स क्वाइट ट्रेंडिंग है. सो देयर आर different categories for the virtual assistant. So when I mentioned that is mainly for the operations, and most of the virtual assistant job is for that only. But आजकल कुछ लोग क्या करते हैं ना, सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए भी virtual assistant हायर करते हैं. So that is the different topic, but yeah, I just want to mention that कि virtual assistant के अंदर वो भी आता है. So if you are good in graphic designing, blog writing, social media marketing, so that is also comes under the virtual assistant, and then you can also get job for that. So that is the different topic, but yeah, that also comes under the virtual assistant. So अगर आपके पास ये सारी skills हैं, then you can get job for that. And then
what is the benefit of hiring this virtual assistant? उनके पास क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बिकॉज ऐसा नहीं होता कि ऑर्गेनाइजेशन में हर टाइम उस काम की जरूरत है. मे बी हो सकता है कि कोई ऐसा मंथ है जहाँ पे उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, सो मे बी दे नॉट कीप दैट पर्सन फॉर दैट मंथ. सो वर्चुअल असिस्टेंट्स की जॉब क्या होती है, वो मंथली बेसिस पे रखते हैं और पर आवर के बेसिस पे भी आपको चार्ज करते हैं. सो जो लोग पर आवर के बेसिस पे चार्ज कर रहे हैं, सो दैट्स वेयर फ्लेक्सिबिलिटी मैटर्स अ लॉट. क्योंकि अगर आपको उनका मे बी किसी टाइम पे उनको जरूरत नहीं है, सो इट्स इट्स एब्सोल्युटली फाइन, वो उस आवर के लिए आपको हायर नहीं करेंगे. और जैसे क्या होता है, अगर फिक्स पोजीशन होती है, देन दे हैव टू पे एवरी मंथ कि हाँ इधर वर्क है या नहीं है, बट स्टिल दे शुड पे that person for that month. But when there is a virtual assistant, then they can pay that person like whenever that work is needed. That is all about the freelancing क्या होती है, मे बी वो आपको प्रोजेक्ट के बेसिस पे पे करते हैं और आवर्स के बेसिस पे पे करते हैं. सो दैट डिपेंड्स कि आप जिस कंपनी में एज अ वर्चुअल असिस्टेंट जा रहे हो, how they are paying. So it's very good to investigate, before accepting the offer, whether it's a monthly, how they are going to pay me, monthly basis, hours basis, or maybe per meetings basis. So it's very good to clarify, these things as well before accepting the offer. So that is the another point. Now I'm moving towards the next topic, next point. So qualifications. So what is the qualification is required for virtual assistants? So first thing, as I mentioned, there is no hi-fi professional degrees required. As long as you will have a right skill set, you can get job for that. So if you have completed your bachelor's, maybe, in any domain, maybe in, maybe pharmacy, not pharmacy actually, maybe in arts, or any, maybe BSc, BCom, maybe any bachelor's, that is the, I think I can say that that's absolutely fine. या फिर आपने कोई specialized training कर रखी है virtual assistant के लिए, that will also work. या कभी कभी कुछ ऐसी कंपनीज होती है, कॉर्सेरा या फिर लिंक्डइन, ऐसे कोई ऐसे कोर्सेज ऑफर करते हैं वर्चुअल असिस्टेंट्स के लिए. अगर आपने वो कोर्स ऑफ कंप्लीट किया है, सो दैट विल आल्सो वर्क फॉर दैट. And there are, but yeah, there are few things that is literally required for that position. Maybe that person should be tech savvy, which means that person should know how to handle the tool, maybe scheduling the meeting, how to handle the Google MS Teams space, or such type of things. I'll talk, in my upcoming slide deck about these skill set. But yeah, these are the few things. Even if you have completed those, maybe trainings and all, but if you don't know about these tools, then it will not work, because this is the basic requirement for that job. So it's very important to learn, these tools or these skills which is required for that particular position. So, and in addition to that, you should know about or aware about what are the software available, or maybe for the, maybe when you are, working in an organization, that they have Microsoft, Office, and maybe the PowerPoint, Excel, and then MS Teams space where usually the meetings or the communication runs. And also, at least the basic requirement is you should aware about these things. I cannot say you should be 100%, because you can go and learn these things when you join the job, but yeah, at least you should aware about these things. And if your virtual assistance job is specific towards the accounts, then yeah, you should know basics about the accounts, and these type of things. So it's depend upon your job, which type of virtual assistant jobs you are accepting, whether it's a normal operations, whether it's related to the social media marketing, whether it's related to the finance. So maybe whatever skills you have, you can go and choose based upon that. Now, what is the benefit of this virtual assistance? So as I mentioned, that is flexible, because virtual assistant में क्या, as I mentioned, कि कभी कभी होता है लोग monthly basis पे पे करते हैं, कभी कभी hours basis पे पे करते हैं. सो एज एंड व्हेन जो भी आपका ऑनर है, जैसे रिक्वायर्ड हुआ, मे बी दोज हु आर रनिंग अ स्मॉल बिजनेस और बिग बिजनेस और मे बी medium business, whenever they need any virtual assistance, so they can hire you for that, and they can pay for that certain duration. So there is a flexibility कि उन्हें monthly pay नहीं करना है, उन्हें जब भी जरूरत है, then they can pay. And also there are certain terms and agreement which you need to sign when you fill that terms and condition documents. That's where I'm saying that it's very important to know more about it, how much they are paying, it's for the month or it's on the monthly basis or the hour basis. So yeah, that thing you can clarify with your employer when you are accepting the job. And now, for small business owners or those who are running the medium business, it's very useful, I can say that, because क्या क्या होता है कि
जो स्मॉल या मीडियम बिजनेस रन करते हैं उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो हर मंथ मतलब मंथली किसी को पे करे जब ज़रूरत ना हो। वो उस टाइम पे कर सकते हैं और हायर कर सकते हैं किसी पर्सन को जब उन्हें ज़रूरत हो। मे बी हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल मार्च मंथ में बहुत सारा काम होता है, सो दे कैन हायर दैट पर्सन फॉर दैट पर्टिकुलर मंथ। एंड मे बी जब उनको अपना बिजनेस ग्रो करा रहे हैं या फिर उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वर्क्स होते हैं, सो दे कैन डू based upon that. So it's a, we can say that it's a cost effective, and it's also, I mean, flexible. So these are the certain benefits of having this virtual assistant. And now moving towards the next topic, and that is quite interesting. What are the tasks that is completed by the virtual assistant? So these are the, I can say, that main task. I'm just talking about the maybe the operation point of view. But as I mentioned, if you are accepting any job which is specific to the social media marketing or the finance, then your responsibility can be vary if it is very specific to that particular position. But in general, the virtual assistants do the, I mean, schedule the meeting. वो मीटिंग शेड्यूल करते हैं मे बी, एंड आई मीन वेन एवर द मीटिंग इज रिक्वायर्ड, और मे बी जो भी इनपुट्स उनके बॉस से उनको मिलेगा उसके अकॉर्डिंग दे कैन शेड्यूल द मीटिंग. They handle the emails, like whatever email communication is that person is receiving, so they will manage that emails. If any email is particular to that particular subject or very specific, then they can ask their boss to handle that email. Or if they can collect the input from their boss, and based upon that they can write the emails, and then they can send that email to the boss, so that that person site head or the CEO, that person can check and give the just okay, then you can go and send the email. So such type of task is done by the virtual assistants, maybe drafting the email, handling the email, and booking the flights. Maybe if that person is traveling and all, then you need to coordinate with that person, booking their flights, cabs, and everything. You need to arrange everything, so that that I mean, the person who is running the business, and also these type of things can run smoothly at least, and manage their social media management. So if it is included in your job responsibilities, then definitely you also need to manage the social media for that particular person, and then checking the calendar, notifying that person that you have one meeting in within 1 hour, or maybe sending the, let me at least notify that person that कि आज उनकी कौन कौन सी meetings है, जो भी maybe जो भी साइड हेड है या फिर सीईओ है, आज उनकी कौन कौन सी मीटिंग है, किस पर्सन के साथ वन ऑन वन है, कौन सी ग्रुप मीटिंग्स है, एंड फॉर दैट व्हाट इज रिक्वायर्ड. I mean, if they need to prepare in notes or PowerPoint presentation, so that type of task should also be handled by this virtual assistant person. And then communication. So communication, maybe sending the email, sending the meeting invites, or maybe maybe scheduling the meeting or handling the calls, and also these type of tasks is done by the virtual assistants. So that is about the task. And yeah, so if you are good at these type of things, then yeah, you can go for that. It's, I mean, it's as long as you have right skill set, and you are enthusiast or passionate for that, and you know that you are well capable of doing that certain jobs, then yeah, you can go and apply for that. And now moving towards the next topic, that is the skills. So as I mentioned, you should be good at Google tools, maybe Google email, and then calendar, and whatever the tools maybe which is related to the office official tools, that you should be aware. And then email writing, sorry, the writing spelling is galat here, I mean wrong here, but yeah, I mean that is the email writing. So you should know at least how to write the professional or business emails. So if you are not yet good at it, so at least you should go and complete some email writing courses and all. So email write kaise karna hai, so for that at least your English communication should be good. So if you know about the, I mean, you are good at it at English, then you can go and write the emails. And then meeting scheduling tools, there are tools like the MS Teams Space, Google Calendar, or Buffer. These are the certain tools which is usually used by the organizations. So
at least you should be good at it. And I can say that I am, regularly scheduling the meeting because I'm a project manager, so I know, and I can say that this is not a rocket science, it's a very simple or easy task. There are, short videos available, how to schedule the meeting via the MS Teams or via the Google Calendar. So if you are not yet aware how to do that, so YouTube पे बहुत सारे आपको ऐसे videos मिल जाएंगे, या LinkedIn ऐसे courses available है that you can complete. So it's not a rocket science, as long as what you need to do, you need to run, you need to learn at least those skills. So yeah. And then communication, so communication is main part, because whenever you are in a business, small or medium or big business, I can say that communication is most important, because the way you communicate is very important. Your English should be good, at least. I mean, English is the bare minimum requirement, for any organizations. And if you're handling this operation task, then definitely you need to manage the calls, write the emails, and also that's where your English should be very good. So you can work on this communication part or the English part. And then content writing, by maybe you are writing an email, you are, maybe if you are managing the social media, or maybe you are managing the Yammer or something. Yammer is kind of social media for the corporate sector. So you are writing a post or something, so that's where it's very important that you should know about these type of uh, task, and you should be good at at least these type of skills, so that you can easily get the job. And then, as I mentioned, MS Office tools, maybe the PowerPoint, I can say that it's not every time required, but yeah, at least you should know what is Excel. And then Outlook is the professional email box, like you have that Gmail. So over your Gmail you are getting all the emails and everything. So that's how there is a separate email for the business person. So Outlook होता है उनका, then Outlooks में ही सारी emails आती हैं and all. So you should know at least what is Outlook, what is MS Teams, what is PowerPoint. So these type of basic tools at least you should aware about. And if you are managing the social media, or maybe sometimes you need to create a post or flyer. ऐसे बहुत सारे आपने designer posts देखे होंगे job के लिए निकलते हैं, and then flyer होता है and all. So that can be done by the Canva. So you should at least know the basics of the Canva and all. So I have created detailed video on the Canva. If you want, if you are interested to learn the whole Canva, how it is working, then you can go and learn this Canva tool from there. Writing a effective cold email is nothing but how you can write the impressive emails. आप कितनी अच्छी emails लिख सकते हैं, because क्या होता है कि कई बार हमें बहुत सारी emails आती हैं, but nobody wants to read those email. But if you see any effective email, then definitely you go and read those emails. So अगर आपके पास ये सारे skills हैं, then there are higher chances that you can get job for that position. So yeah, these are the required skills, I can say that, for that particular position. So yeah, go and learn these skills if you want to earn a good amount of money simply by sitting at your home. घर बैठ के अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, then yeah, you should learn these skills. And then where you can find these opportunities. So I have listed some of the freelancing platform where jobs are usually posted. So Fiverr, I have created video on that. अपवर्क, या अपवर्क पे भी आप जाके आपको जॉब जॉब मिल सकती है. लिंक्डइन, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एंड प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको बहुत सारी जॉब मिल सकती है, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ, इफ यू डू नॉट हैव, आई मीन इफ यू डोंट हैव दिस लिंक्डइन प्रोफाइल, गो एंड क्रिएट योर लिंक्डइन प्रोफाइल. बिकॉज जब भी कोई रिक्रूटर या एचआर कोई भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो, सबसे पहले वो आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल चेक करते हैं. सो इफ़ योर लिंक्डइन प्रोफाइल इज इम्प्रेसिव इनफ, देन डेफिनेटली यू विल गेट द जॉब फॉर दैट. सो लिंक्डइन पे आप अपनी एक अच्छी इम्प्रेसिव प्रोफाइल बनाओ. आई हैव क्रिएटेड सेपरेट वीडियो फॉर द लिंक्डइन प्रोफाइल, सो यू कैन गो एंड वॉच माई वीडियो एंड देन क्रिएट योर लिंक्डइन प्रोफाइल फॉर दैट. सो या लिंक्डइन के थ्रू आप अपनी अच्छी प्रोफाइल बना लो, एंड देन यू कैन अप्लाई वाया द लिंक्डइन. सो लिंक्डइन के थ्रू भी आपको मिल सकती है जॉब. एंड देन दीज आर द अदर freelancing platform, or from where you can get the job, like the freelancer, remote, okay, Generalist, and then contra, flex job. So these are the some platforms from where you can get the job. You need to search the keywords, and then you will find the tons of jobs which is available over there. And if you want me to create a separate video how you can find the jobs over the LinkedIn, or how you can get notified by the recruiter, so I can also create separate video on that part. But yeah, for that you need to comment into the chat box. If you are interested, then definitely I'll be more than happy to create video on that part. So yeah, I believe that's all I want to cover in my video.
So yeah, this is all about the virtual assistants. And guys, I am pretty much sure this is gonna work for you, because I know in my organizations also, whenever if any person is, at the higher position, everyone have this this one operation manager, so that they are sending the invites on their behalf, sending the one on one meeting invites, और बहुत सारी ऐसे चीजें हैं जो ऑपरेशन मैनेजर करता है. सो आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप जाके करो. इसके लिए कोई स्पेसिफिक एजुकेशन रिक्वायर्ड नहीं है. एंड आई नो समटाइम्स ड्यू टू एनी पर्सनल रीजंस हम बहुत अच्छी एजुकेशन परस्यू नहीं कर पाते हैं, बट स्टिल आई नो कि कई बार हमें पता भी नहीं होता है कि ऐसी कौन सी जॉब है जो हम कर सकते हैं, बिकॉज हमें ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, जिन्होंने बहुत अच्छी डिग्री करी है दे कैन ओनली अर्न द गुड अमाउंट ऑफ मनी. नो, इट्स अ मिथ. लाइक आप जिस जनरेशन में जी रहे हैं यहाँ पे, अगर आपके पास राइट स्किल सेट है, एंड इफ यू नो फ्रॉम वेयर यू कैन गेट द जॉब, अगर आपको कोई पर्सन गाइड कर रहा है, देन यू कैन गेट अ जॉब. इफ यू नीड इट जॉब, देन आई कैन डेफिनेटली गाइड यू कि आपको ऐसे जॉब्स कैसे मिल सकते हैं, बिकॉज आई नो आई एम इन टू द MNC world and I know how these things are working. So I do have that practical knowledge or practical experience. I can say that मैं on a ongoing basis मैं ये सारी चीज़ें देखती हूँ कि कैसे वर्क कर रहा है. That's where I'm recommending that कि ये कुछ भी बड़ी चीज़ नहीं है. It's not a rocket science. अगर आपके पास कोई मिनिमम से भी एजुकेशन है, लाइक BA MA या कुछ भी, और बैचलर्स में भी अगर आपने कोई सिंपल सी मतलब ऐसा कर रखी है, दैट विल ऑल्सो वर्क. बट एटलीस्ट द स्किल सेट विच आई हैव मेंशन, इफ यू हैव दोज स्किल्स, देन या डेफिनेटली यू कैन गो. लाइक योर कम्युनिकेशन शुड बी गुड, you should be good at email writing, content writing, and then you know how to handle these official tools like the Google Calendar or Microsoft Office. Then definitely you can get the job. And if you like my video, so please hit on the like button. And also if you have not yet subscribed my channel, तो आप मेरा channel भी subscribe कर ले, because I'm regularly creating video on my channel, so that you all can get benefit from these type of videos. And I know कि ये तभी पॉसिबल है जब किसी के पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो जो चीज़ें शेयर करे, बिकॉज आई डू अ लॉट मोर सर्च बिफोर क्रिएटिंग एनी वीडियोज. आई डू नॉट वांट टू just spread the wrong information just for the sake of creation. No, I do a lot more search and then I create the video, so that you all can get benefit from my video. And I'll be more than happy अगर आपको मेरे वीडियो के थ्रू कोई जॉब मिलती है. And also please write a comment on that, so मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि कमेंट पढ़ के कि हाँ मेरी वीडियो के थ्रू किसी को जॉब मिली है. And thank you so much for watching my channel. And do like my video. And if you find this useful, add your comments. And if you want to learn anything else, then yeah, also add your comment. So yeah, thanks for watching. Bye bye.